everybody, so today we are going to begin with the lesson number 7 of your class 6 English grammar, that is the adjective degrees of comparison. So let's begin with this lesson. Comparing adjectives, the method of describing how things differ from one another. जो हम compare करते हैं adjectives को, क्या होता है, वो एक method होता है describe करने का, एक चीज दूसरी चीज से कैसे different होती है. So when we wish to say that something is more or less or the same of something else, we employ adjectives comparison. So हम क्या लगा, हमें कोई चीज पता लगानी थी कि वो उससे कम है, उसके जैसी है या उससे ज्यादा अच्छी है, तो हम क्या लगाते हैं, adjectives of comparison लगाते हैं. Three forms of comparison are positive, comparative and superlative. Yes, adjectives की three form of comparison होती है. की क्या होती है, first one is positive, then second one is comparative जो compare करती है, and the third one is superlative जो sum में compare करती है. So the three degrees of comparison: positive, comparative and superlative. Now look at these three sentences. Virat is a tall boy. Virat क्या है, tall boy है. Rohit is taller than Virat. जो रोहित है वो थोड़ा सा taller है विराट से. और Rahul is the tallest of the three. और राहुल क्या है, सब में ज्यादा tallest है. So first one is positive, second one is comparative and third one is superlative, because उस सब में comparison करा कि three of them में सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, tallest, and second one दो में comparison करें कि वो taller है. So the word tall, taller, tallest are the three forms of adjectives tall. Yes, the first sentence one, when we say Virat is tall boy, we are not comparing him with any other boy. First one में तो हम compare ही नहीं कर रहे किसी और boy से उसको. In second, Rohit is taller than Virat. We are comparing two boys. हम two boys को compare कर रहे हैं, रोहित को और विराट को. और in third sentence, Rahul is the tallest of the three. राहुल क्या है, तीनों में tallest है, तो हम three of them को चारों में से हम compare कर रहे हैं, तो वो क्या है, superlative degree हो गई. हम दो से ज्यादा को compare कर रहे हैं इसमें. So the word taller is said to be the positive degree. Taller क्या है आपका, positive, tall क्या है आपका, positive degree में, क्योंकि we use a positive degree of an adjective when we do not make any comparison. जब हम कोई comparison नहीं करते तो हम positive degree of adjective use करते हैं. और the word taller is said to be the comparative degree. Why? Because we are making a comparison between two boys. So we are comparing the two person or thing or two group of person or things. Now in the third sentence, the word tallest is said to be in the superlative. किसमें है वो, superlative degree में, क्योंकि we are comparing, we use a superlative degree of an adjective when we compare more than two person or things. जब हम दो से ज्यादा person और things को compare करते हैं तो हम superlative degree को use करते हैं. Now thus we conclude that no comparison में positive degree होती है. जब कोई comparison नहीं होता तो क्या होता है, there is positive degree when there is two person or when we are comparing two person or thing, then it is comparative degree. And then when we are comparing more than two person or thing, जब हम दो से ज्यादा person or things को compare करें, that is superlative degree. Now formation of the comparative and superlative degrees of adjectives. कैसे formation होती है, most adjectives from the comparative degree by adding er. comparative में क्या लग जाता है, positive degree में er लग जाता है, और superlative में क्या लग जाता है, est लग जाता है. So positive is clever, comparative will be cleverer, and the superlative will be cleverest. Positive rich, comparative richer, superlative is richest. इसमें comparative में er लग गया, superlative में est लग गया. Now rule 2, if the positive ends in e, जब आपका positive किससे end कर रहा होता है, e से end कर रहा होता है, so हम क्या add करते हैं, comparative में r add कर देते हैं, superlative में st add कर देते हैं. So like brave, braver, bravest, noble, nobler, noblest, pure, purer, purest, wise, wiser and wisest. If the positive ends in y, जब positive आपका y से end कर रहा होता है तो y क्या है हमारा, y तो हमारा consonant होता है. So immediately before it the y is changed into I. y किस में आ जाता है, I में आ जाता है. Comparative में क्या लगा देते हैं हम, I r लगा देते हैं, और superlative में I s t यूज करते हैं, est and er. So positive is easy, y को क्या कर दिया हमने, I कर दिया. So easier, easiest, comparative में easier and superlative will be easiest. Happy, happier, happiest. Lazy, lazier, laziest. Wealthy, wealthier and wealthiest. Now but if the y has a vowel before it, अगर y से पहले क्या है, vowel आ गया, that is a, e, i, o, u, कुछ भी आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, y को हम I में चेंज नहीं करेंगे.
So क्या होगा? Gay, gayer, gayest, gray, grayer, grayest. Now if the positive is the word of one syllable, अगर आपका positive one syllable का word है, it ends in a single consonant. वो किस में end करता है? Single consonant में करता है, और one word shorter vowel उससे पहले होता है. The consonant is double before adding er and est. Consonant double हो जाता है उसमें, er और est consonant तो हमारा double हो गया, और उसमें क्या लगाते, उसके आगे लगाते थे er लगाते थे कंपैरेटिव, और est ना सुपरलेटिव, like bigger, big, bigger, biggest, fat, fatter, fattest. Now many adjective of two syllable and all adjective of more than two syllable. जो बहुत सारे adjective होते हैं one two syllable के, और जो बहुत मतलब one syllable के, और two syllable of all adjective and more than जो दो से ज्यादा होते हैं from their comparative by using more before the positive and their superlative by most. हम क्या लगा देते हैं? मोर लगा देते हैं कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में क्या लगाते हैं? मोस्ट लगा देते हैं. पॉजिटिव से पहले लाइक ब्यूटीफुल का क्या है? मोर ब्यूटीफुल इन द कंपैरेटिव, इन सुपरलेटिव इट विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल. डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. फेथफुल मोर फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल. इंपॉर्टेंट मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Now some adjectives are compared irregularly. कुछ adjectives irregularly compare होता है. They do not follow any of the rules given. कोई भी rules जो given होता है वो follow नहीं करते वो. So we try to remember that comparative and superlative form. हम क्या remember करते हैं? comparative और superlative form को remember करते हैं. Like bad का क्या होता है? comparative, worst, and superlative be worst. Far, further, farther या further, farthest या furthest. Good, better, best. Late, later, latest, later या last. Little, less, least. Many जो नंबर वाला होता है more and most. Much वे भी more और most होता है. Near, nearer, nearest. Old, older, oldest. Elder, eldest भी होता है. Now how to use the degree of comparison को हम कैसे use करते हैं? Double comparative and superlative. Like we should be careful not to use double comparative और superlative. हमें तो double comparative और superlative को use नहीं करना है, हमें careful रहना है. हमें we should not say like one is more prettier than Amarjeet. हमने prettier भी लिख दिया और more prettier भी लिख दिया, तो वो क्या है? ये तो correct है, but prettier is the comparative degree of pretty. Prettier क्या है? comparative degree है pretty की. और more क्या हो गया? More is also used to form comparative. More भी comparative हो गया. So degree. So it is wrong to use prettier. We should write the sentence one is prettier than Amarjeet. ये sentence क्या है हमारा? Wrong है. So similarly we should not write Mount Everest is the most highest. Most भी कर दिया और highest भी कर दिया. दोनों superlative degrees हमने यहाँ पे use कर दी. Instead we should write Mount Everest is the highest peak in the world. Now much many का कैसे होता है? We use much with quantity many. हम much हम क्या यूज करते हैं? much quantity के साथ यूज करते हैं, और many हम numbers के साथ यूज करते हैं. और we can say that we use much with uncountables and many with countables. हम much uncountables के साथ यूज करते हैं और many countables के साथ यूज करते हैं. Example much work, much trouble, many children, many customer. हम children और customer को तो count कर सकते हैं, तो trouble और work को count नहीं कर सकते, तो we have used much over here. Now little, a little, few, a few. We use little with quantity. हम little किसके साथ यूज करते हैं? quantity के साथ यूज करते हैं. few हम किसके साथ यूज करते हैं? number के साथ यूज करते हैं. little means almost none. A little means some. Similarly few means almost none. A few means some. So example, little help, almost no help. Few listeners मतलब almost no listeners. A little helps कुछ मतलब कुछ help आ गई. A few listeners मतलब कुछ listeners आ गए. Now elder, older, eldest and oldest. So we use elder and eldest only with person. हम elder और eldest को खाली person के साथ use करते हैं. We do not use these words with animals or things. हम animals और things के साथ elder और eldest को use नहीं करते. My elder brother is a teacher. My eldest sister has got married. Now if we are going to use then in a sentence, we use older and not elder. अगर हम सेंटेंस में then यूज कर रहे हैं तो हम older यूज करते हैं, हम elder यूज नहीं करते. Like Raju is older than his sister. Older and oldest can be used with person as well as thing. Older और oldest हम person के साथ यूज कर सकते हैं, things के साथ यूज कर सकते हैं. Like Yuvash is the oldest boy in our class. This is the oldest house in our street. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Now
Thank you and have a good day.